So hello, welcome folks to this new video, and in this new video we are going to solve the next problem of this FRAZ DSA sheet, and we have successfully solved 6 problems of this linear DP section, and today we are going to solve next problem, coin change. So let me open it. So the problem's statement is you are given an integer array coins representing coins of different denominations and an integer amount representing a total amount of money. Return the fewest number of coins that you need to make up that amount. If that amount of money cannot be made up by any combination of the coins, return -1. You may assume that you have an infinite number of each kind of coin, right? Okay, okay, first let me sign in with my account. Hmm, It's through Google. Fine. So let me share my whiteboard and then we will see how to solve. So if you take the first example, which is nums, not nums here, we will say this coins. So we have coins array. So 1, 2, 5. We have to make some 11. So we have to find out whether we can make sum as 11 by picking these coins. You can take any coins any number of times you can pick. So you have so in this case for making it 11 you have multiple options, right? So like you can take uh, 12, sorry, not 12. You can take coins as 1 1 1 11 times and it will make sum as 11, and we are using total 11 number of coins. Similarly, I can also take 2, 2, 2, 2, 5 times 2 and then 1. So in this case, we are using 6 coins. So I can also take 5, 2, 1, 7, 1, 1, 1. In this case, also I am using 6 coins. Right. So similarly, for solving this, for getting a sum as 11, we have multiple ways, right? So our task is to, these are just few, out of all possible ways, uh, we have to find out whether it is possible to do in as minimum as possible coins. So in this case, what I can do, I can take 2, 5 and one coin of rupees 1. So it will sum as 11. In this case, I am using just 3 coins. So it is proven that there is no better way if you choose from this coins array to make sum as 11. So you have to use minimum 3 number of coins. So for this test case, answer is 3. So just by looking it, you can say I will start with I'll always try to pick the coin whose value is maximum, and I will pick जब तक कि मेरे पास ऑप्शन है उसको पिक करने का, लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई हैव 11, so let me share you the fact. So let's say in the case of 11, you would say ki, you have denomination of 1 to 5. You will say, I will always pick the bigger coin if its value is lesser than the sum. So in this case, 5 is lesser than 11. So you will say 5. You will pick 5. Now 6 is remaining. Again, you will say 5 is lesser than 6. You can say that I will use 5. And then now 1, you will check.
whether one is there or not. So you will think that you will greedily pick whatever the best possible at that moment, right? But that is not correct, right? Because in let me give you one test case. Let me think why it is not possible. Okay, so if I would say you have coin of 3, 5, 7. This is nums 3, 5, 7, and you have to make 18, right? So you will say I will pick 7. So you will pick 7 and the remaining is 11. You will say again I will pick 7. Now remaining is 4. There is no 4. So you will say there is no possible answer in this case. But what if you will use 5 plus 5 plus 5, 3 coins of 5 and 1 coin of 3. So in 4 coins you can make some 18. So there is no greedy way to solve this problem. There are a lot more cases. So in that case, what we will do? We have option for trying out all possibility. You just whatever possibility is there, you can try out. But that will be the recursive solution, and that will be exponential. For every element, you have option of picking it or not picking. If you pick it, then so if you just try out their exponential complexity algorithm, which is recursive algorithm. So we will not use any recursion here. We will not use any greedy problem here. We will use our traditional whatever we are learning since last couple of videos. We will try to apply that algorithm. Okay, so we will try to apply dynamic programming algorithm. So actually, a dynamic programming approach, not algorithm. So I will apply dynamic programming. Dynamic programming to solve this problem. So पहले तो डायनामिक प्रोग्रामिंग से सॉल्व करने का फंडा है हमारा। हमने प्रीवियस सारे वीडियोस में मैंने डेली डिस्कस किया है। हम अपने फंडे को यूज करेंगे जो हमने खुद से बनाया हुआ है। इस फंडे में 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप, डिफाइन योर डीपी। Second step, solve for smaller values. And third, combine solutions and generate transition. So we always discuss this fact that whenever we will define our DP state, we will always try to start with linear approach. Means, so in this case, we have given an array. So this array is coins. So, and we have some amount. So, what we will do, we will define our DP state as in a way that what are the minimum number of coins? Because let's see how you can think. There is optimal. You can find some optimal substructure and repetitive subproblems. Like how you can just see that this can be solvable by DP. So let's say you have to make some X coins. You have to make some X amount of coin. X amount. Let me write is not X coins. Yeah, X amount. So if जो मिनिमम क्वाइंस जो नीडेड है एक्स के लिए, सो उसको हम कैसे देख सकते हैं? तो लेट से अगर तुमने बोला कि मेरे पास क्वाइंस है 1 2 5 और तुम 5 चूज कर रहे हो, मैंने बोला कि मैं 5 को चूज कर रहा हूँ, तो अगर मेरे 5 आंसर में आ रहा है तो वॉट एवर दी आंसर फॉर दिस, जैसे इसको थोड़ा और बेटर वे में समझते हैं। एक्स नहीं यूज करता हूँ मैं, वैल्यू डायरेक्ट यूज करता हूँ। तो देखो, मेरा कहने का मतलब है कि अगर तुम्हारे पास तुमको अमाउंट चाहिए 20 रुपीज, ठीक है, तो 20 रुपीज के लिए
मिनिमम कॉइन बताना है, मिनिमम कॉइन बताने कितना है। तो अगर तुम्हारे पास आंसर है कि 15 रुपीज के लिए मिनिमम कॉइन क्या होगा, तो तुम उसको यूज कर सकते हो कि 15 के लिए मैंने ऑलरेडी कंप्यूट कर रखा हुआ है कि 15 रुपीज बनाने के लिए मुझे कितना मिनिमम कॉइन चाहिए। तो अब मेरे पास सिर्फ 5 बचे हुए हैं, तो 5 को बनाने के लिए मुझे कितना चाहिए। अब मैं उसको ऐड करता हूँ सेट में, समझे। और क्लियर हो जाएगा अगर मैं जब भी डीपी डिफाइन करूंगा तो थोड़ा और क्लैरिटी मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द डीपी डिफिनेशन। ये वी हैव दिस थ्री golden rule. So I will start with the first thing, which is define our DP state. Define your DP state. So here DP of I will define. What it means? Uh it means minimum number of coins required. So in most of the cases, in almost every cases, this is the same as what the question is asking. So minimum number of coins required to make amount I. मतलब कि आई बोलता है कि इतनी रुपीस बनाने के लिए मेरे को कितना मिनिमम कॉइन चाहिए। तो ये हमारा डीपी का डेफिनेशन है। नाउ आवर सेकंड स्टेप इज सॉल्व फॉर स्मॉलर प्रॉब्लम्स। सो लेट से मान लेते हैं अभी हमारे पास डिनोमिनेशन है 1 to 5 ही है, ठीक है। तो देखो, अगर मेरे को डीपी ऑफ जीरो लिखना है, डीपी ऑफ जीरो, इफ आई हैव टू राइट डीपी ऑफ जीरो मीन्स 0 रुपीज बनाने के लिए कितने कॉइन्स चाहिए तुमको। ऑफ कोर्स जीरो, एक भी कॉइन नहीं चाहिए। नाउ अगर मैं डीपी ऑफ वन लिखूं, डीपी ऑफ वन लिखूं, तो वन बनाने के लिए कितना चाहिए। तो तुम क्या करोगे, तुम इस पे, इस वाले पे, इस कॉइन्स वाले एरे पे आइटरेट करोगे, बोलोगे कि मैं अगर एक को यूज करता हूँ, इफ आई विल यूज वन, सो मैंने वन को यूज किया, तो वन को यूज करने से अब मेरे पास कितना, क्योंकि डीपी ऑफ आई मिनिमम कॉइन बता रहे कि इतना, तो अब मेरे पास कितने बचे, जीरो। तो इस जीरो के लिए मेरे पास ऑलरेडी आंसर कंप्यूटेड है, आंसर कंप्यूटेड, विच इज डीपी ऑफ जीरो। तो क्या करोगे तुम, डीपी ऑफ वन क्या होगा, वन प्लस डीपी ऑफ जीरो। बट बिकॉज दिस इज वन, ऐसा नहीं करोगे कि तुम वन कर लोगे, तुम वन पे ट्रेवर्स किए फिर टू पे भी जाओगे, बट जब टू पे जाओगे तो टू को जैसे ही तुम ऐड करोगे तो वन से बड़ा हो जाएगा, तो टू को तुम वैसे भी नहीं ऐड कर सकते। सो हम टू को कंसिडर नहीं करेंगे, हमारा लूप नहीं चलेगा यहाँ पे, ठीक है। सो आई विल मूविंग टू द नेक्स्ट डीपी। अब डीपी ऑफ थ्री पे जाओ, डीपी ऑफ टू पे जाते हैं। अब डीपी ऑफ टू, ठीक है। अब मैंने डीपी ऑफ टू के लिए वन को पहले लिया, अगर मैं वन कॉइन यूज करता हूँ तो मेरे पास कितना पैसे बचा, वन बचा। तो वन के लिए हमारे पास ऑलरेडी आंसर कहाँ पे है, डीपी ऑफ वन में है। ये हमारा आंसर वन के लिए स्टोर करके रखा हुआ है, तो वन प्लस डीपी ऑफ वन। फिर मैं टू को भी ले सकता हूँ, अगर मैं टू को लेता हूँ तो टू प्लस, मेरे पास कितना, मेरे को 2 रुपए बनाने हैं एंड आई हैव टेकन टू, सो हाउ हाउ मच रिमेनिंग अमाउंट आई हैव, जीरो। सो जीरो के लिए वी हैव ऑलरेडी कंप्यूटेड द आंसर कि फॉर जीरो वी हैव ऑलरेडी द बेस्ट आंसर, सो वी विल जस्ट ऐड डीपी ऑफ जीरो। बट देयर इज चांसेस दैट कि इनमें से कोई एक ही मिनिमम रहेगा या मल्टीपल मिनिमम हो सकते हैं। सो आउट ऑफ दिस ऑल वी विल स्टोर जस्ट मिनिमम आउट ऑफ ऑल, ठीक है। इसी तरीके से डीपी ऑफ थ्री, डीपी ऑफ थ्री मीन्स तुम वन ले सकते हो, वन को लोगे, जस्ट ये क्या बोलते हैं 1 to 5, वन पे आइटरेट किए, डीपी ऑफ टू, टू लिए, डीपी ऑफ टू लिए तो डीपी ऑफ वन। फाइव नहीं ले सकते क्योंकि फाइव इज मोर देन थ्री, सो इन दिस केस यू विल टेक मिनिमम ऑफ दिस, ओके। नाउ लेट्स से कि वी हैव डीपी ऑफ सिक्स, इधर हमने डीपी ऑफ कंप्यूट कर लिया, डीपी ऑफ फोर किया है,
डीपी ऑफ 5 कर लिया, अब डीपी ऑफ 6 पे आते हैं। डीपी ऑफ 6 हम कंप्यूट करने जा रहे हैं। डीपी ऑफ 1 यूज किया, डीपी ऑफ 5 में हमारा आंसर रहेगा, ऑलरेडी कंप्यूटेड है। 2 कॉइन यूज 2 रुपीज का कॉइन यूज किया तो डीपी ऑफ 4 में आंसर रहेगा, ऑलरेडी कंप्यूटेड है हमारे पास। 5 यूज किया तो डीपी ऑफ 1 में आंसर रहेगा, ऑलरेडी कंप्यूटेड है हमारे पास। आउट ऑफ दिस ऑल वी विल टेक दिस मिनिमम। तो हमारे पास हर अमाउंट के लिए डजेंट मैटर कि कितना अमाउंट बनाना है, फॉर एवरी अमाउंट वी आर ऑलवेज स्टोरिंग द बेस्ट आंसर फॉर दैट वैल्यू। ओके, सो दिस इज द फंडा बिहाइंड द दिस प्रॉब्लम। सो क्या करोगे, तुम्हारे पास क्वाइंस है, ठीक है, ये क्वाइंस सारे हैं। नाउ अगर तुम एक जनरल डीपी के लिए फॉर्मूला लिखने की कोशिश करो, तो डीपी ऑफ आई विल बी व्हाट इट विल बी, यू विल आइटरेट ओवर फॉर ऑटो क्वाइन इन क्वाइंस। तुम इन क्वाइंस पर आइटरेट करोगे और चेक करोगे इफ दिस coin is lesser than I, less than equals to I, so dp of I will be minimum of dp of I, या तो जो पहले से कंप्यूटेड आंसर होगा प्रीवियस स्टेप में, मतलब जो भी तुम सारे पे आइटरेट कर रहे हो, आउट ऑफ ऑल तुमको लेना है, या ये, या तुमने एक कॉइन और ऐड किया और तुमने इस कॉइन पे तुमने आइटरेट किया, इस कॉइन को तुमने पिक किया और उसके बाद तुम्हारे डीपी ऑफ आई में से ये कॉइन की वैल्यू को घटा दिया। मीन्स तुमने ये कॉइन पिक किया तो तुम्हारे पास रिमेनिंग, मैंने अभी ये कॉइन तुमने पिक किया तो तुम्हारे पास रिमेनिंग कितने कॉइन्स बचे, मतलब कॉइन्स नहीं, अमाउंट बचा, उस अमाउंट के लिए कितना मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन होगा, दैट विल बी द आंसर। सो दिस इज, तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ अमाउंट, जितना भी तुम्हारा अमाउंट है का रेंज रहेगा, इनटू साइज ऑफ क्वाइंस अरे, ठीक है। और जो तुम्हारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो होगा ऑर्डर ऑफ अमाउंट, क्योंकि तुमको एक डीपी बनाना होगा वेयर आई इज डिनोटिंग amount I, and you have to try out for all I from 1 to जो हमको टारगेट दिया हुआ है, जितना सम हमको बनाना है, एंड वी विल ट्राई आउट फॉर ऑल कॉइन्स, ठीक है। सो दिस इज द idea behind this problem. This is pretty easy problem, that's why I am not giving much time on it. Let's directly jump to, if you have already seen my earlier previous videos, this question will be cakewalk for you. So let's directly jump into the implementation. So I will create one vector of dp which will be amount plus 1, and initially the value, let me write it 1 in 9. So I am initializing my dp state as maximum. There is, because if there is no way to make that sum, so for that cases I have to take some maximum value, so that when we are taking the minimum over all possibility, it should not be considered. Now what it means, so let me dp of I means minimum number of coins required to make some I. Now we know that dp of 0 rupees बनाने के लिए we need dp of 0 coins needed, ठीक है। for int I equals to 1, I am going to try out for all amount, and also I will going to try out for all coin, जितने भी coins हैं इन coins में, if this amount
let me give better name. This amount, this amount minus coin less than equals to greater than equals to 0. Why I am doing this? Because let's say you are trying to you are trying to make amount 3, but your current coin is more than 3. So anyway you cannot pick that coin because that is more than 3. So that's why this is check for, just check for that case. Okay, so if amount minus coin greater than equal to 0, so I will update my dp of I as minimum of dp of I, and I am picking this coin. So I will add 1 because I am picking this coin, and whatever the answer is computed for, if I will subtract the value of this current coin from the current amount. So this dp will have the answer for already computed, best answer for already for remaining amount which is already calculated, right? Now we will just return dp of amount, right? Let's try to run it. It should get accepted. What is wrong? dp of I, something wrong? Sorry, no, it's not dp of I, it's amount. Okay, let me run it. It should get accepted. Oh yeah. So we have to consider one more case because here the coin, we have only coin 2 and we have to make the amount 3, which is not possible. So that's why we have initialized or DP with 1E9 maximum value, so that it can act as both. Like if there is not there is no answer possible, it should contain this bigger value so that its effect is not क्या बोलते हैं impact the answer. And also here we can do one more thing. If this dp of amount will be 1 in 9, we will simply return minus 1 from there, and let's try to run it. Now it should get accepted, and let me try to submit it, and uh, yeah, accepted. So this is the solution for this problem, and let me mark it as complete. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 more problems in this DP section. We will try to finish in as early as possible. If I will get time, I will try to make two or more than two, three videos a day. Obviously in weekends because I'm also working professional, so it is tough for me to create videos. So thank you for watching these videos. Please like, subscribe to my channel, and if you have any query, drop your query in the comment section. I will try to answer it. Thank you. Bye bye. See you in next video.